Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this week lecture, we will discuss sufficient condition for differentiability. In the previous lecture, we had discussion of necessary condition of differentiability in which we discussed the Cauchy-Riemann equations. और हमने ये डिस्कस किया था कि जिन पॉइंट्स पर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है. एंड सेम टाइम्स वी डिस्कस दैट जिन पॉइंट्स पर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं वी कैन नॉट श्योर कि उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो. हमने इसके लिए एग्जाम्पल भी देखा था जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे थे बट स्टिल द फंक्शन वाज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट. Now, in this lecture, we will identify the sufficient condition along with the CR equations and with certain continuity condition for u and v, which were the component of the function fz. So, let me discuss this condition in form of a theorem which says, let the function fz is equal to u x comma y plus iota v x comma y be defined throughout some epsilon neighborhood of a point z naught that is equal to x naught plus iota y naught. And suppose that we have two conditions. First is about the existence of the first order partial derivative of u and v, and it says the first order partial derivatives of the functions u and v with respect to x and y exist everywhere in the epsilon neighborhood. ओके, जिस नेबरहुड में हमने देखा था कि जो ये फंक्शन डिफाइंड है हम उसी नेबरहुड की बात कर रहे हैं. देन द सेकंड कंडीशन सेज दोज partial derivatives are continuous. So this is the extra condition that provide the sufficient condition for differentiability. Okay, at x naught comma y naught and satisfy the Cauchy-Riemann equations. Okay, what are the equations? Ux is equal to vy and that uy is equals to minus vx. और हमने ये देखा था Cauchy-Riemann इक्वेशन स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है, so that must be true at some point x naught comma y naught. Okay, now if we have this scenario then we can identify the derivative of function at z naught. Okay, and in that situation then the first order derivative of f at z naught exists. This is the first conclusion, exist, and it is given by, and it is given by f prime z naught is equals to ux x naught comma y naught plus iota v x naught comma y naught. Okay, दैट इज हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आइडेंटिफाई करने और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स नॉट कोमा वाई नॉट पर. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट.
proof. So proof is quite constructive. We need to use many concepts from the continuity